माइक टेस्टिंग 1 2 6 9 ओके। आ गया है वो दिन जब मैं फाइनली जा रहा हूँ इंडिया 1.5 साल बाद। एंड ये मेरा सामान है पूरा एकदम, रूम भी एकदम ख़राब हुआ पड़ा है, कुछ भी मेरा समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या है, घर है कि घोंसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरा रूममेट जय जो मेरे को बहुत हेल्प किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प किया सामान पैक करने में। हाँ देखो वो हंस भी रहा है। बट आज है जनवरी 8, ठीक है, एंड मतलब कुछ 10:30 बज रहे होंगे, मे भी पता नहीं कितना। एंड कल मेरा फ़्लाइट है ट्यूसडे 9 जनवरी को 9:30 का, तो मैं 3 3.5 घंटे पहले निकलूँगा। एंड फाइनली मैं इंडिया जाने वाला हूँ यार। तो मैं लाइक कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि यार इतने टाइम बाद मैं इंडिया जाऊँगा, इवन दो लाइक चीज़ें अभी स्टेबल हो रही थी एंड अब मैं इंडिया जा रहा हूँ वेकेशन के लिए। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कभी कभी बीच में ब्रेक भी लेना होता है। सो आई विल सी यू गाइस ऑन दी एयरपोर्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अभी जाने के लिए एयरपोर्ट। ऑलराइट, फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पर, पीएसएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे मैं बोर्डिंग पास के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ। लाइक कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना कभी मैंने ऐसा फील किया था कि मैं इतना क्लोज रहूँगा इंडिया जाने के। एंड लाइक मैं अभी आया हूँ तो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड राइट नाउ, एंड लाइक आई एम रियली नर्वस एट द सेम टाइम। पर नहीं, फॉर सम रीज़न आई वाज लाइक रियली हाइपर एक्टिव एंड लाइक रियली हैप्पी एंड पैनिकिंग एट द सेम टाइम। मेरे को पैल्पिटेशंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ इमोशंस, इट्स लाइक अ ग्रेवी ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बोर्डिंग पास लूँगा एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर माई इमिग्रेशन। फाइनली यार मैं हो चुका अपने चेकिंग के साथ एंड सब लगेज के साथ। मैंने सब क्रॉस चेक कर लिया, मेरा सिक्योरिटी चेक भी सब हो चुका है। सिर्फ तो आई जस्ट पुट ऑन माय बैग। फाइनली डन यार। आई एम लाइक स्टिल पैनिकिंग। आई हैव नेवर पैनिक्ड दिस हार्ड in my life, like never in my life. Like, oh boy, like oh shit, why am I having this weird feeling? It's like euphoria, yeah. This feeling, I don't know whether I should call it euphoric or not. I'm like super scared and excited. But I mean यार, कौन नहीं होगा excited? इंडिया अपने जान, इंडिया ही नहीं, not just India, your home country. Anyone will be excited. But like मेरे जैसे लोग like super weird यार right now. Like मेरे को पता भी नहीं कि करूँ क्या। मैं पहला रिएक्शन मेरा ये है, I'm like what am I supposed to do? I'm like so fucking lost at the moment कि मैं इधर से उधर देख रहा हूँ। I'm like I can't even pay attention to a single thing right now. तब बस जाकर मेरे को भी टर्मिनल में वेट करना है। मेरे को मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है, इसके अंदर है, नहीं दिखाऊंगा मैं तुम लोग को ही। जाकर लेट्स सी क्या होता है यार फ्लाइट में जाकर। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा सीट नंबर इज़ B, सो आई हैव टू सिट इन बिटवीन 2 people. आई एम लाइक ओह फक, क्या करूँगा? इट्स ओके, इट्स ओके। मैं आ चुका अपने गेट नंबर पर E75 एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग रियली नॉट इवन, कुछ नहीं पता नहीं। इट्स जस्ट लाइक आई एम जस्ट गोइंग इनटू अ ज़ेन मोड या कुछ समथिंग फ्लो स्टेट ऐसा, आई डोंट नो। इट वाज लाइक आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक एट दिस मोमेंट। आई कांट इवन फील एनी इमोशंस। ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट लाइक ओके लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। ऐसे तब जाके चीज़ें इंप्रूव होंगी। दैट्स व्हाई जस्ट और मैं सिर्फ मीडियम हॉट चॉकलेट स्टारबक्स से लाइक ना मैं भी नहीं पीऊँगा ये, इट्स फ्रीकिंग हॉट। इससे वेपर से पता चल रहा है, सो आई जस्ट बर्न माई लिप्स। बट आई डोंट नो, इट्स लाइक मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फॉर मी rather than a vlog. And this documentary में I don't know what am I even gonna say. Like my past 2 months I didn't even like record anything. I just wasted my time, I guess. I just wasted my time. Like मेरे academics भी काफ़ी ख़राब नहीं हुए, like ख़राब गए हैं. I didn't fail even though, but like I still got वाले average grades. And plus I had to shift twice because of some uncertain circumstances.
and उसकी वजह से like काफ़ी issues हुआ and I'm plus trying to grow my hair out एक certain hairstyle के लिए because और भी upcoming events है, so I'm just like trying to grow my hair out because मेरे को पता नहीं all of a sudden अच्छा लगने लगा कि like मेरा बड़े बाल अच्छे दिखते हैं. and I also thought कि एक certain hairstyle में adapt करूँ just like somewhat ऐसा पीछे and inside it like ये एक ऐसा hairstyle लंबा सा. I don't know ऐसा समझेगा clear या नहीं, but like it's all effed up यार. So I'm here just waiting for my flight to announce boarding, and it's just like in 1.5 hours. 1.5 hours नहीं, shoot, 1 hour and 15 minutes. So like they said 8:30 ko and it's 7:15 right now. So I'm just waiting यार. I'm just waiting and I don't know मैं दो लोगों के बीच में कैसे बैठने वाला. I'm just gonna suffocate to death. Super weird, I don't know, like it's like ऐसा लग रहा है I'm just leaving Canada once again. Like last time मैंने give up कर दिया था. This time I'm not giving it. It's just a small break to get my mind fresh and reboot everything and start my journey all over again. But still तुम अभी भी देख रहे हो यार, मैं बात करने में भी इतना ये feel कर रहा हूँ weird. So I'm just me, to be honest. I'm just me at the moment. मेरा कल ही घुटना विच इज़ मंडे कनाडा में, तो लाइक मैं अपने दोस्त से मस्ती कर रहा था. वी वर प्लेइंग स्नोबॉल फाइट, तो आई जस्ट जम्प्ड ऑफ फ्रॉम अ रियली स्मॉल हाइट एंड वहाँ पे मेरा लेफ़्ट नी वापस स्नैप कर गया. सो लाइक आई इंजर्ड माई लेफ़्ट नी टू मंथ्स अगो वाइल प्लेइंग फुटबॉल. सो लाइक मेरा पूरा ऐसा नी ऐसा लाइक जस्ट स्क्वीज्ड लाइक अ क्लॉथ एंड it made the finger cracking sound. So I was like, oh shoot, kya ho gaya? And again that injury is back and that pain is back all over again. So I'll have to get some physiotherapy. So I'm just like trying to calm myself down. So like abhi main gana sununga thoda sa and I'll just chant some mantra yaar. I'll just pray to God ki just to keep me happy in life. Because I know it sounds selfish, but you have to be selfish sometimes in life. Most of the times, because like no one's here for you permanent. Okay, no, nothing's permanent. Even your own existence is not permanent. So it's like just live your life. And what I mean to say by this word quote unquote live your life is live your life in a way that you will not regret living at the end of the day. ताकि you have no regrets at the end of the day, even if you die right now, because we as humans have a lot of regrets in the past. Some of us may not have a lot of regrets, but still shoot yaar, I'm feeling fucking hot right now. Like my body is really hot, just can't do anything. Whew. Holy smokes, man. Alright guys, oh shit, फाइनली आ गए बोर्ड करने का फ्लाइट. सो हमने प्रोसेस कर लिया है एंड वी आर इनसाइड द बैगेज. तो हम जाएंगे अपनी सीट की तरफ. ऑब्वियसली इट्स इकोनॉमिक फ्लाइट, इकोनॉमिक सीट. 10-10.5 घंटे एंड वी विल बी इन इस्तांबुल. तो आई विल सी यू गाइस इन इस्तांबुल. बाय. Guess what guys, guess what, मैं फाइनली इंडिया में लैंड कर चुका हूँ. I've officially landed in India. Holy shit guys, like finally आधा घंटा वेट करने के बाद I finally got my food. Honestly I'm so smoked right now कि I can't even talk at the moment. And मेरे दोस्त आए हुए हैं exit पे. They are waiting for me. I'm so fucking excited right now that I finally get to go home from all that shit, even though it's for a short period of time, but still I'm just like really lucky. I just love it here. Alright, आज हो चुका है Sunday, which is 14th Jan, and unfortunately ना मैं टर्की का इस्तांबुल का कुछ रिकॉर्ड कर पाया because I was really messed up in my mind.
एंड ना मैं इंडिया में लैंड होने के बाद उतना कुछ रिकॉर्ड कर पाया, बट फ्रॉम माई मॉम्स POV उन्होंने लाइक रिकॉर्ड किया मेरे और मेरे दोस्तों का मिलना. सो लाइक आई वॉज रियली हैप्पी एंड ये रहा उसका POV. पता ही था आप आए हो. पीछे से कुछ रिटायर्ड बच्चों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी. देख लिया, हो गया, देख लिया POV, अच्छा लगा, गुड. मजाक कर रहा हूँ. सो लाइक बट क्या कहता है, लाइक रियली हैप्पी जब मैं अपने दोस्तों से मिला. एंड लाइक जब मेरी मॉम आई तो आई वाज एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा तभी मैं एक्साइटेड रहा. एंड मेरे को अभी कॉल आ रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट लाइक आई एम रियली हैप्पी कि मैं भी आया हूँ फाइनली अपने घर. इवन दो लाइक आप कंपेयर करोगे लाइफ स्टाइल, यू माइट फील लाइक कि ओ कनाडा का लाइफ स्टाइल इज़ काइंड ऑफ बेटर कंपेयर टू इंडिया का लाइफ स्टाइल एंड स्टफ. बट फॉर मी लाइक मेरे दिल में अभी भी इंडिया के लिए जगह बहुत ज़्यादा है. आई स्टिल फील दैट सेम वार्मथ दैट आई फेल्ट 1.5 years ago. एंड वो लाइक कंपेरेबल है ही नहीं. एंड जो 2 महीने में गायब भी था, लाइक इट वॉज ड्यू टू सम पर्सनल इशूज़. सो लाइक मैं उतना कुछ रिकॉर्ड किया भी नहीं, इवन तो मैं करना चाहता था, बट आई जस्ट couldn't do it. या बट लाइक नाउ दैट आई एम हियर, मैं लाइक बहुत सारी अभी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बहुत अपकमिंग चीज़ें होने वाली है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अगेन. एंड प्लीज़ यार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, सब्सक्राइबर्स ही नहीं, प्रॉपर एक्चुअल व्यूज़ बढ़ा दो यार, कर दो मेरे को फेमस. क्या क्या जा रहा है इतने अच्छे यूट्यूबर को तुम लोग को फेमस करने में, देखो. एंड क्या कहते हैं, मतलब मैं अपना आई वॉज लाइक काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुट थिंग्स टुगेदर बिकॉज लाइक I had fucked up a lot of things वो 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में. So I was like trying to sum up everything ताकि I could become stable all over again. So यार मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. और stay consistent, stay disciplined, and I'll see you guys in next video. Bye. मैं भी काला हाँ अपनी माइकल जाने ने अपना राइस ट्रेन के अपना राइस चलो.